Assalamu alaikum. A very good evening to everyone. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I start in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and peace be upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is Faisal Nadeem from AMP, Association of Muslim Professionals. A very warm welcome to everyone. Today we are here for AMP free employability training program. Topic for today is expectation of corporate world. I would now do a short presentation about AMP. AMP India Foundation is a non-for-profit organization registered under Section 8 of the Companies Act 2013, Government of India, for providing voluntary social service to meet the needs of underprivileged individuals, that is, upliftment of the underserved and needy through education and vocational training, employment support, medical relief, economic empowerment, student mentorship and guidance. The above services are provided to needy individuals irrespective of caste, creed, and religion. Employment Assistance Cell. We all are witnessing AIF success as one of the most admirable national level NGOs striving for 3 E's: education, employment, and empowerment. Keeping in mind AIF's core objective of supporting the underprivileged, promoting education, and creating economic empowerment, AIF had launched a special project with the name of AIF Employment Assistance Cell during its initial stages of formation. Today, it is one of the core projects of AIF. Major EAC activities. Our major EAC activities include, but are not limited to, conducting job fairs, job drives, employability training programs in colleges, skill training companies, tie-ups, candidate mobilization, skill development courses. Job fairs. Job fair is one of the flagship project of AIF, and we have successfully organized 43 job fairs till date. Every job fair has participation of minimum 50 companies and 2,000 plus candidates. AIF has organized job fairs in the past in collaboration with Thane Police, Aurangabad Police, West Bengal Minority Finance Development Corporation, Andhra Pradesh State Minorities Finance Corporation, and other reputed NGOs. These government organizations and NGOs collaborate with AIF as local partners and take care of the local ground promotions in the job fair arrangements. AIF invites corporates like TCS, Asian Paints, Reliance Group, Cafe Coffee Day, MC McDonald's, Team Lease, Tech Mahindra, and other reputed corporates in the job fairs. Job drives. Job drives are similar to job fairs but are organized on a much smaller scale compared to job fairs. In a job drive, we typically invite only up to 2 to 3 corporates who have specific openings and advertise their openings profiles in order to attract suitable candidates. We conduct job drives every week through India in collaboration with the other consultancies and NGOs through the help our chapters. These local partners do ground promotions for candidate mobilization and take care of all the arrangements of the job drives. In case of multiple openings, we also organize special job drives for a corporate wherein we invite only one corporate and help them fill their requirements. Employability training programs. AIF Employability Training Program or ETP has been developed to assist job seekers find the right job at the right place at the right time and to become the right fit in a present day modern organization. Our ETP trainers are seasonal professions who have in-depth and understanding of employability training and committed to investing their valuable time, resource, and knowledge in grooming the candidates. We team up with colleges in different cities and conduct ETPs there on a regular basis, usually once every month. Skill training companies tie-ups and candidate mobilization. Skill training companies tie-ups. AIF has partnered with reputed skill training companies like Tata Trust, Whirlpool, Tech Mahindra, Foundation, etc. We have also arranged skill training melas in Mumbai by inviting around 20 skill training companies to hire and train unskilled candidates who could not pursue their higher studies after 10th and 12th standard. Candidate mobilization. AIF has mobilized candidates for various skill development courses like home appliance technicians, AC technicians, mobile repairing technicians, and solar engineering under Skill India Mission in centers all across India. Our achievements: employment assistance, 43 plus jobs out of 9 online job fairs, 275 plus job drives out of 20 online job drives,
220 plus employability training programs out of 37 online ETPs, 100 plus mock interviews in colleges, 25,000 plus candidates placed in jobs. Career Fest organized 6 career fest, benefited 1,50,000 plus students. Our new initiative, empowerjobs.com, connecting right talent with right opportunity. Empowersjobs.com was launched on 6 December 2020. It is a unique job portal which comprehensive offerings introduced by MP India Foundation for job seekers, especially those hit by COVID pandemic. Now I would like to introduce the speaker for today, Mr. Ahmad Nadeem. I would now like to welcome Mr. Ahmad Nadeem, who has a 15 years of experience in different fields. He has been a soft skill trainer, personality development trainer, certified counselor, and more categories of trainers. He has associated with TPO of Aligarh Muslim University and many more colleges to provide training to their students to make them employable and deployable too. Now I would like to welcome Mr. Ahmad Nadeem and hand over the session to him. Thank you, everyone. Ahmad. Thank you so much, Faisal Saab. Thanks a lot for the introduction of AMP and introduction of mine. So thanks a lot. Thank you so much. So without any further delay or ado, should I start the session? Yes, sir. Okay. You can start the session. Okay. My name is Ahmad Nadeem, working as Training and Placement Officer, come Assistant Professor at Al Barakat College, Aligarh. Today I'm going to take the session, and the topic of the session is expectations of corporate or corporate world from freshers. They have a lot of expectations. Even the students are having a lot of expectations from corporate. So it is very important to go for the critical thinking that the kind of expectations the corporate is looking from the freshers are genuine or not. Whether all the expectations are really can be fulfilled, must be fulfilled or not, or what exactly they look, and what exactly is the expectation of freshers, of the students, what exactly they are looking. Are they thinking that they have completed their MBA and BTech and MTech and graduation, and because of the brand university, because of the brand college, they should get the job? क्या ये thinking चल रही है क्या? Is it our mindset? So see, from last 12 to 15 years, what we have been observing that the soft skill has taken place like anything. Like anything means like anything, especially for those students who are the part of management, who are getting the knowledge of management, who are doing the MBA, BBA, these kind of courses, or the certification or diploma in marketing and sales. So the expectations are really very high with these kind of students. In fact, the expectations with the engineers and with the doctors, with the IT professionals are also there, but it is not up to that particular mark like MBAs and BBAs. So let's try to have a look. So before we go into the specific slides of what is the expectation of corporate world, let's try to have a look on some pictures. The left side picture is expectation on the day of convocation, and the reality is this. What I have been observing from many years, कि picture college में कुछ होती है, but when the students are moving for the job, तो फिर reality कुछ different होती है. उसके reasons क्या है? उसके बहुत सारे reasons हैं. There are many reasons, several. ये एक, this is an assumption, not the exact data. Approximately ये this is a guesswork. I believe कि ये data कम ही होगा. So अगर हम ये मान के चलें कि अगर 20 से 30 लाख ग्रेजुएट पास आउट होते हैं हर साल, so okay, before this I really want to let you know that
every year I sit with the team of HRs, some 8 to 10 members in that particular team, and I try to get the trend of the corporate. So whatever they say to me, I convey to the freshers. I convey to the students. See, this is the trend. This is upcoming. This was the past. The current expectation is this. In upcoming 3 to 4 years, this could be like this. तो वो पिक्चर जो वो बताते हैं मुझे, मैं सेम पिक्चर बिना किसी मैनिपुलेशन के वो आपको दे देता हूँ. नाउ what they say कि 25% are employable, and this is they are talking when they go for the campus drive. When they go for the campus drives in colleges and universities, they say कि 25% बच्चे ऐसे हैं जो employable हैं, जिनको हम हायर कर सकते हैं. तो 75% बच्चे हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर रहे. तो वो क्या क्या रीजंस हैं? एंड दे से वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दे से कि there is a term we call it deployment. So the deployment rate, they say this is maybe 1%. So it is better to know the difference and the meaning between employability and deployment, or the employment and deployment. See, the word deployment we commonly use for those who are doing their regular training without any hurdle, without any stop, without any comma, and without any pause. They do their training. So those who are doing their training are the strong parts of deployment. ये वर्ड हम उन्हीं के लिए यूज करते हैं जो बिल्कुल ट्रेंड होते हैं. सो डिप्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं? ओके, सपोज एक रूटीन चल रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इन एनी इंस्टीट्यूशन द रूटीन इज गोइंग ऑन. ओके, एंड ऑल ऑफ अ सडन मैनेजर रिसीव द मैसेज फ्रॉम द हायर अथॉरिटी कि अभी आपको एक ऐसे प्रोफेशनल को भेजना है क्लाइंट के पास जो अच्छा कम्युनिकेशन कर सके, जिसका प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, कॉरपोरेट काइंड ऑफ हो. उसके बाद अपनी कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटीज को काइंड ऑफ सेल आउट कर सके, और थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की नॉलेज रखता हो. ठीक है, तो इस तरह के बंदे जब हम नजर डालते हैं कि भाई इस तरह के प्रोफेशनल हमारे पास कितने हैं, तो पता चलता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अभी मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज नॉट फॉर द फ्रेशर्स. अभी मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो आर द प्रोफेशनल्स. तो हमको लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 में बड़ा फिल्टर करना पड़ता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक वो लगाना पड़ता है, लेंस लगाना पड़ता है. ऐसा 1, 2, 3 या 4 बंदे ढूंढने में, सपोज इफ द स्ट्रेंथ इज 100 और 150, सो अगर मुझे ऐसा लगता है 4-5 बंदे 100 आउट ऑफ 150 मुझे मिल रहा है जो अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, जो सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज रखते हो, जिनका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छा हो, जो क्लाइंट रियलाइजेशन फेज जानते हो. द टर्म क्लाइंट रियलाइजेशन फेज इज अ वेरी लार्जर टर्म. इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. क्लाइंट को प्रॉपरली सुनना, what exactly they are looking, giving the solution, going for the critical thinking, understanding their needs. Suppose if I am not getting anything, then how to connect with the subject matter expert to the client. ये सारी चीजें क्लाइंट रियलाइजेशन फेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अपार्ट फ्रॉम दिस many more points. So हो क्या रहा है, पिछले 10-15 सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि कंपनीज ये चाह रही हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट कैरी गुड सब्जेक्ट नॉलेज. अलॉन्ग विद द गुड सब्जेक्ट नॉलेज, द सॉफ्ट स्किल नॉलेज एंड ट्रेनिंग मस्ट बी देयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट सी पिक्चर अब दिखने लगी है. उसका रीजन भी कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं, बिकॉज changing the company without any information or for the sake of 1,000 or 2,000 rupees has
brought us at this particular place. ठीक है, अगर कोई कंपनी आपकी अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग कराती है, आपको दूर भेज के एक अच्छी सॉफ्टवेयर की नॉलेज देती है, आपका एक्सपोजर करती है, आपका अपग्रेडेशन करती है, एंड आपके पास विजनरी अप्रोच नहीं है और आप 1000, 2000, 3000 के लिए कंपनी चेंज कर देते हैं, so that is not good. That is really not good. So that visionary approach must be there. So if you are having that kind of visionary approach, obviously you are going to become the part of the deployment team. So what I have observed from many years, that when the teams are coming for the interview in so many colleges and universities, they don't only give the employment, they always look for the for that kind of stuff जो अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट कर सके, और जब उन्हें नहीं मिलता है तो वो डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट कहीं ना कहीं रोक देते हैं, या फिर उस तरह की हायरिंग कर लेते हैं जो रेलेवेंट हायरिंग नहीं होती, फिर उनको लगता है चलो इसको ट्रेंड करते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा. So if you are focusing for the deployment, the conclusion of this particular slide is, if you are focusing for the deployment, the employment is already there for you. If you are getting the part of the deployment, the employment is already there. तो क्या चेंजेस आए हैं इन लास्ट 4 to 5 years, क्या चेंजेस आए हैं, इंटरव्यू का फॉर्मेट कैसे चेंज हुआ है, किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे आप अपने आप को बेहतर प्रूव कर सकते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस पे कैसे खरे उतरते हैं. लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट स्लाइड. जब कोई भी टीम आपके पास आती है, whether they are coming to the campus or you are going face to face in the organization, what they are looking, apart from the technical skill, I repeat, English communication skills, analysis. पहले मैं ऐसा देखता था कि एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी, एक सीनियर के अंडर रख के उसको 3 महीने 4 महीने अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी, जो कुछ छोटे साइज की कंपनीज से मिस हो रही हैं. तो उसका भी रीजन कहीं ना कहीं हम लोग खुद हैं. तो एचआर्स का कहना ये है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स मिस हो रही हैं वो करीब करीब 72-73% है, और एनालिसिस नहीं है, डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर, डेटा को एनालाइज नहीं करते हैं, सिचुएशन को एनालाइज नहीं करते हैं, सो पाई चार्ट काइंड ऑफ चीज नहीं बनाते हैं. तो वो जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं 57 के आसपास उनको दिखता है कि यार हमने अगर 100 इंटरव्यूज लिए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है 50 से 60 बच्चे ऐसे थे जो डेटा एनालिसिस को बहुत अच्छी तरह नहीं देख रहे थे, जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स वाज नॉट अप टू द मार्क. तो उन 8 से 10 एचआर को ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्लाइड्स बनाई है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ. उसके बाद इस इंडस्ट्री पहले ट्रेनिंग पे बहुत पैसे खर्च करती थी, लेकिन हमारी जो बड़ी इमैच्योर सी अप्रोच है ना, उसमें अब रेडी मटेरियल कंपनी ढूंढने लगी है, खासकर छोटी साइज की कंपनी. एजुकेशन स्किल एंड एक्सपर्टीज. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एमबीए. ठीक है, सपोज इफ आई एम रिसेंटली पास आउट and I have completed MBA. So MBA is my education. My skill is, if I am completed major marketing is my skill. Expertise is when I am going to work in the corporate or as professional for some 3 to 5 years, then that would be my expertise. So जो प्रोफेशनल करियर या जॉब स्टार्ट होती है वो इसी सीक्वेंस में आगे चलती है. एजुकेशन, फिर उसी से कनेक्टेड स्किल्स, एंड स्किल से कनेक्टेड एक्सपर्टीज धीरे धीरे बनती जाती है. नाउ दिस इज द वेरी important part, especially from last 4 to 5 years. I have observed that the total interview of 12 to 15 minutes, suppose if they are going to give some 12 to 15 minutes for one candidate, the most of the times they focus on the internship.
because if you have completed your internship seriously, you would be considered as semi professional person who has just initiated. और इसका दूसरा फायदा आपको मिलता है जॉब पोर्टल्स पे, क्योंकि मैं देखता हूँ naukri.com में, टाइम्स में 0 to 1 year का एक्सपीरियंस जब मांगते हैं, तो उसमें अगर आप अपने इंटर्नशिप के पार्ट को सही से डिस्क्राइब कर सकते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट टू, या 3 to 12 months, 2 months to 12 months. तो इन सारे चीज़ों के बीच में आपकी इंटर्नशिप काफ़ी वैल्यू करती है, बिकॉज इफ यू हैव completed your internship honestly, believe me, you are going to rock the interview and you have the upper hand and always. And this is a trend. Corporate का trend होता है 2 + 2 = 4, and then what +1? +1 is that particular internship or that knowledge of software, any or the knowledge of any other language जो आपको प्लस में लेके जाती है. So suppose एक assumption लेते हैं, एक example लेते हैं कि suppose if the current trend is for post graduation. Okay, so the first 2 is for graduation, the second 2 is for post graduation. Then what is +1? The +1 is your either a strong internship or certification in any kind of language, foreign language, or certification of any kind of software will take you totally different than the other participants. So kahin na kahin you will have to prove that you are going to, you have already started your preparation to become the part of the corporate right from the first year of your either graduation or post graduation. See, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरी प्राइवेट सेक्टर में तो अक्सर बात होती है, वो कहते हैं, और ये मैनेजमेंट के लिए मैंने बनाया है, स्पेशली वो स्टूडेंट जो मैनेजमेंट के हैं, उनके लिए कहा जाता है सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राइवेट सेक्टर के लिए जितना सब्जेक्ट नॉलेज है तकरीबन उतना ही सॉफ्ट स्किल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. गवर्नमेंट सेक्टर में यस थोड़ा सा मामला डिफरेंट है, आपको सब्जेक्ट नॉलेज ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, 70 to 80 हो सकता है, कभी कभी 90%. लेकिन इंटरव्यू में यू विल हैव टू प्रूव योर पर्सनैलिटी, you will have to prove that whether you are the person who takes the calculated risk and challenges or not. ये तो बहुत important. Suppose take an example. Suppose if you are through with your UPSC exam with pre and main and you are rejected in interview, then what? Then what next? So सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, ये आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है. कितना पार्ट है ये डिसाइड करेगा आप किस पर्टिकुलर जॉब के लिए जा रहे हैं. सो इफ यू आर गोइंग फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, इफ यू आर गोइंग फॉर IT techies, if you are going for in education sector, if you are going for real estate, then you must have to go for the critical thinking. If you are not aware that how to prepare and from where to start and where to move, you can approach to your counselor, you can approach to your trainers, you can approach to your faculty members. आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. आज के टाइम में इतने ट्रेनर्स इमर्ज हुए हैं पिछले 3, 4, 5 सालों में, बेतहाशा इमर्ज हुए हैं, और काउंसलर्स भी, और ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी. और मैं देख रहा हूँ कि काउंसलिंग आने वाले दिनों में बहुत आम हो जाएगी, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट बट आई बिलीव फॉर पेरेंट्स टू, because in many cases the parents are also the decision makers of their kids. So they must know कि कॉरपोरेट में क्या चल रहा है, कॉरपोरेट में जो बिग नेम्स हैं वो क्या हैं, मिडिल मैनेजमेंट क्या होता है, मिडिल साइज कंपनीज क्या होती हैं, स्मॉल साइज कंपनीज क्या होती हैं,
SWOT क्या है, स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल पार्ट है या एक्सटर्नल पार्ट है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एक्सटर्नल पार्ट है या एक्सटर्नल पार्ट है. सो द पर्सन हु इज द डिसीजन मेकर मस्ट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तभी क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि स्टूडेंट्स के साथ एक चैलेंज ये भी है कि उनको अपने पेरेंट्स को कन्वे भी तो करना है सारा मैसेज, और उनको कन्विंस भी कराना है. So you must know that where exactly you are moving. And if you have opted engineering, then what is the reason? If you are very much clear on the why, then the how is going to be done. How के लिए इतनी problem नहीं होगी if your why is clear. Why I am doing MBA, why I am doing engineering, why I am doing this, and why I am doing that. अगर आपका why अपने अपने कोर्स, अपने करिकुलम, अपनी ट्रेनिंग को चूज करते वक्त क्लियर है, तो ये कैसे होगा ये इतना बड़ा इशू नहीं है. आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट तो मिल ही जाएगी. बट यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर देन व्हाई आई हैव ऑप्टेड टू डू द MBA, व्हाई आई हैव ऑप्टेड टू डू द BCA or MCA. It must be very clear. See, मैंने एज आई सेड टू यू कि जब मैं अपने चार्ज के साथ मीटिंग करता हूँ, उनसे मेरी बात होती है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जब आप कॉलेजेस में विजिट करते हैं, जब आप इन हाउस फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं, जब आप ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं, तो व्हाट आर द एरियाज वेयर यू फोकस अलॉट. तो उनके ये रिप्लाई थे जो अभी आपका स्क्रीन दिख रहा है. उन्होंने कहा कि लेट्स अज्यूम कि हम 10 नंबर कम्युनिकेशन में देने जा रहे हैं एंड 10 इन पर्सनालिटी एंड 10 इन इंटर्नशिप. बट इसके बाद जो उन्होंने एक बात कही मुझे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड आई बिलीव दे आर वेरी मच फेयर एंड दे आर वेरी मच प्रैक्टिकल. व्हाट दे से कि if the student is carrying very good subject knowledge, very good, and the same student is carrying the very good soft skills knowledge, he is very good presenter, he presents like anything, he communicates like anything, his personality is very good, he looks very good, he has the ability to sell out his qualities, he has done his internship fairly. Even having all these points, अगर उसने अपना इंटरेस्ट एंड अपनी जील फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब बहुत ज्यादा शो नहीं की, तो हम डाउट में पड़ जाते हैं कि हम उसे हायर करें या ना करें. बिकॉज द टीम ऑफ HR और द HR is responsible if one has joined and went back after a week or 2 or a month. तो उससे HR से ये सवाल पूछा जाएगा कि what kind of person you have recruited, what is the reason, what have you seen, क्या देखा था तुमने. और हम इंटरेस्ट कैसे शो करते हैं? सिर्फ इंटरेस्ट शो करने के बड़े सिंपल से तरीके हैं. आप जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी वेबसाइट को पढ़िए, कब बनी, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करते हैं, किस पर्टिकुलर सर्विस में डील करते हैं, क्या उनके मेन क्लाइंट्स हैं, उनके पास बड़े प्रोजेक्ट्स कब आए, कौन उनके HR का मेंबर है, कौन उनके टॉप मैनेजमेंट में बैठा हुआ है, कहाँ इनका पेरेंटल ऑफिस है, कहाँ कहाँ इनकी ब्रांचेस हैं. यही सब आपको पढ़ना है. जाते वक्त आप अपने अपने CV के अगर 10 कॉपी बैग में रखेंगे तो ये कोई गलत बात थोड़ी है. और अगर आपके सामने 4 या 5 या 3 इंटरव्यूअर्स बैठे हैं, and if you are giving only 1 copy or the another person is giving 1 copy each to each, then it means a lot. यहाँ से डिफरेंसेस बनते हैं. So ये सारे एरियाज हैं जहां हम अपना इंटरेस्ट शो करते हैं. Along with the resume or CV, if you are going to give your cover letter, and believe me, if your cover letter is very well designed and written, believe me, if I am the recruiter, I am not going to open your CV. Believe me. क्योंकि जॉब में
जितना स्पेसिफिक आपका कवर लेटर होता है ना, उतना स्पेसिफिक सीवी नहीं होता है। हो सकता है आपका सीवी, आपका रिज्यूमे देख के मुझे ये लगे कि मैं आपको 2 या 3 प्रोफाइल में कंसीडर कर सकता हूँ, सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर, 2 या 3 प्रोफाइल, बट आपका कवर लेटर इज गोइंग टू टेल दैट इन दीज सिमिलर 3 profiles in which you are the most compatible and capable and the most fit person. तो उसको कहीं ना कहीं अपने सीवी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाइए। whenever you move for any kind of interview, always go with your cover letter. It gives a very different impression. It is totally different impression. तो ये आपके zeal और interest का एक पार्ट है। ये वो एरियाज हैं, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी एंड इंटर्नशिप, जिसमें मोस्ट ऑफ द एचआर्स सॉफ्ट स्किल को कवर करते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज का पार्ट अलग है। अगर हम उनको 2 हिस्से में डिवाइड कर दें, 50% सब्जेक्ट नॉलेज एंड 50% सॉफ्ट स्किल्स, तो सॉफ्ट स्किल का ये पार्ट है। सब्जेक्ट नॉलेज आपको अपने हिसाब से पता होगा, ऑब्वियसली। See, this is the point, this is the slide जो मैं आपको बता रहा था कि your zeal, your zest, your interest, uh, you are going to show that you are the best fit for this particular job, and your interest can tell a lot. Your problem solving abilities are going to tell a lot. Your positive attitude is going to tell a lot. See, most of the time what we believe कि एटीट्यूड, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एटीट्यूड मीन्स ईगो। नो, इट इज नॉट ईगो, इट इज नॉट ईगो। मुझे मुझे जहां तक चीजें पता है, मैं जितना जानता हूँ, मुझे लगता है कि एटीट्यूड, हाउ यू आर, हाउ योर थॉट प्रोसेस इज वर्किंग पॉजिटिवली इज योर एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख, बल्कि आपको मैं 2 एग्जाम्पल्स बताता हूँ। देखिए पॉजिटिव एटीट्यूड क्या चीज होती है। जैसे एक कॉलेज से 2 फ्रेंड्स सेलेक्ट हुए एक ऑर्गेनाइजेशन में, और दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करने लगे, एक ही कंपनी के एक ही डिपार्टमेंट में, सेल्स में, क्लाइंट हैंडलिंग में। 3 साल के बाद उनके इमीडिएट बॉस ने दोनों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि तुम लोग अभी तो ऑफिस से लीव होने का टाइम है, 5:30-6 o'clock हो रहा है, बट तुम लोग थोड़ा सा 10-15 मिनट बैठो, मुझे जरा इंपॉर्टेंट बात करनी है तुम लोगों से। दोनों सामने सोफे पे बैठ गए। दे वेटेड फॉर 15 minutes. One of the employee stood and went to his cabin. और उसने सोचा कि यहाँ बैठने से अच्छा जो कल का काम है उसको कर लें, पता नहीं क्या बात होने जा रही है, नो वन नोज, देखते हैं क्या सरप्राइज है। तो वो अपने केबिन में जाके बैठ गया और अपना काम करने लगा। आफ्टर 40 minutes, बॉस कॉल्ड दैट गाय हु वेंट टू हिज केबिन। उसको बुला लिया और उससे कहा कि तुमको यहाँ से अभी 800 किलोमीटर दूर फ्लाई करना है, और एक क्लाइंट से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंपनी, व्हाट यू वांट टू से। तो उसने कहा कि सर मेरा जो मेरी जो अप्रोच है वो ये होगी कि पहले मुझे क्लाइंट का नाम बता दीजिए। तो उन्होंने कहा दिस इज ABC इज द क्लाइंट। ओके, क्या काम है सर? ये काम है। रिलेटेड ड्राइंग ये है। कब चाहते हैं आप मुझे वहाँ पे? उन्होंने कहा कि कल सुबह सुबह तुम्हारी 9 बजे मीटिंग है। उन्होंने कहा कि ओके, आई एम रेडी। बॉस ने अपने ड्रॉअर से उसका टिकट निकाल के दिया और उससे कहा तुम्हारी रात में 12:30 बजे फ्लाइट, ये तुम डिसाइड करो, यहाँ से तुम्हें घर जाना है, यहाँ रहना है, जो करना है तुम करो। उसने कहा सर मैं अक्सर विजिट करता रहता हूँ और ऑफिस में मेरा एक छोटा सा स्क्रॉलर रखा हुआ है, मैं घर कॉल कर देता हूँ,
कि मैं निकल रहा हूँ और 1-2 दिन के बाद आऊँगा। आप मुझे ऐसा करिए, जो कंप्लीट ड्राइंग और कंप्लीट डिटेल है कंपनी की वो दे दीजिए, मैं बैठ के स्टडी कर लेता हूँ और खाना खाने के लिए निकलूंगा और वहीं से निकल जाऊंगा। तो दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड. And the second person who was just sitting and waiting on the sofa in the common area, he was still waiting. और उसको फिर बॉस ने बुला के कहा, आप जा सकते। बॉस पहले से जानता था। इनफैक्ट ही वॉज नॉट बॉस, ही वॉज द लीडर। उसको पता था कि मैं किसको बुला रहा हूँ और वो क्या कर सकता है और उसकी क्या एबिलिटीज हैं और उसकी क्या अप्रोच है। सो ये पहला जो इंसान था ना, जब ये छोड़ेगा तब दूसरे को मिलेगा, अगर ये छोड़ेगा तो जिनके पॉजिटिव एटीट्यूड्स होते हैं ना, जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, वो जल्दी छोड़ते नहीं चीजों को। और मल्टीटास्किंग उन्हीं को दी जाती है जिनके अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं, जो इसे कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जज करने का, पहचानने का काम एक अच्छे लीडर का होता है। तो ऑफिसेज में आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है ना, वो आपको बॉस कम मिलेंगे, लीडर ज्यादा मिलेंगे। दे कल्टीवेट द न्यू एम्प्लॉइज, नए एम्प्लॉयज को कल्टीवेट करते हैं, उनको आगे धीरे धीरे लेके आते हैं, उनको चैलेंजेस देते हैं, ताकि वो कल को इंडिपेंडेंटली चीजें हैंडल कर सके। एंड दैट कम्स विद योर पॉजिटिव एटीट्यूड। द सेकेंड थिंग, द सेकेंड एग्जाम्पल, एक लड़का है, अ, अ, Safwan, Siraj, can we have question answer round at the end of the session, or you want to say anything? Sure, we will have the question answer session at the end. Okay, okay, You thank you so just much. complete, then we will have a question answer Okay, session. okay. So next 10 to 15 minutes. Sure, sure, sure. Not an issue. Okay, okay. Uh, एक एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक 12-14 साल का लड़का है जो रोड पे खड़ा हुआ है और उसको घर जाना है। उस जहाँ पे वो लड़का खड़ा हुआ है वहां से उसका घर सम 4 to 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर ही इज स्टैंडिंग। तो उसने लिफ्ट के लिए कई लोगों को अपना हाथ दिखाया और अचानक से एक मर्सिडीज आके रुकी एंड ही वाज सरप्राइज। वो he knew nothing about the Mercedes or this and that. He thought it is a car. और उसने जो ड्राइवर था, द पर्सन हु वाज ड्राइविंग द कार, उसने शीशा नीचे किया और उससे पूछा कहाँ जाना है। उसने कहा मुझे यहाँ जाना है। उसने कहा मैं उसी तरफ जा रहा हूँ जो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। एंड यू यू वर लुकिंग फॉर द लिफ्ट। उसने कहा यस। जैसे ही वो बच्चा कार में बैठा, उसको रियलाइज हुआ कि वो किसी बहुत लग्जरी काइंड ऑफ सीट पे जाके बैठ गया। एंड ही स्टार्टेड फीलिंग एंड टचिंग द लग्जेरियस पार्ट ऑफ द कार। सीट छूने लगा, डैशबोर्ड छूने लगा और गियर देखने लगा, स्टीयरिंग देखने लगा, उसके डिफरेंट बटन्स देखने लगा। बड़ा लड़का वो हुआ कि भाई इतनी अच्छी कार पहली बार मैं बैठा हूँ, झटके से लिफ्ट मिल गई। तो ड्राइवर, द पर्सन हु वाज ड्राइविंग द कार, ही सेड कि क्या देख रहे हो, तुमने इससे पहले मर्सिडीज देखी है? कहने लगा नहीं, मैंने तो नहीं देखी। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमको पता है ये मुझे किसने दी है? तो लड़के ने कहा अच्छा तो ये आपकी नहीं है? तो उसने कहा है मेरी, ये मुझे मेरे बड़े भाई ने गिफ्ट की। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, लड़के का जो फील था कार को लेके, जो वो टच कर रहा था और फील कर रहा था उसका लग्जेरियस पार्ट, वो थम सा गया। एंड फॉर 2 to 3 minutes ही वॉज इन द साइलेंट मोड। कार चल रही थी, चल रही थी। अचानक से फिर से पूछा ड्राइवर साहब ने कि क्या हो गया, तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा भी कोई बड़ा भाई हो और वो तुम्हें ऐसी कार गिफ्ट कर दे। तो उसने कहा सर नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मेरा एक छोटा भाई है, तो मुझे क्या करना होगा कि मैं उसको ऐसी कार गिफ्ट कर सकूं, इतनी लग्जरी और इतनी महंगी कार। एंड दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। वो छोटा सा बच्चा गिफ्ट लेने के लिए बहुत आसानी से सोच सकता है, बट ही डिड नॉट वेंट फॉर दिस, ही डिड नॉट गो फॉर इट। सो ये एटीट्यूड होता है।
ये एटीट्यूड कॉर्पोरेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट डायनेमिज्म मस्ट बी टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ द लाइफ। ये डायनेमिज्म डायनेमिज्म इज अ लाइफ। अगर आप हॉस्पिटल के किसी मॉनिटर पर देखिए तो लाइफ का मतलब अप्स एंड डाउन, द वेव्स आर, बिल्डिंग्स आर ऑलरेडी देयर, लाइन ऊपर जा रही नीचे आ रही, ऊपर जा रही नीचे आ रही। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डायनेमिज्म को मेंटेन रखिए। एंड लाइफ इज नॉट मोनोटोनस, एक जैसी नहीं चलती, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट कीप योर एटीट्यूड एंड पॉजिटिव अप्रोच ऑलवेज ऑन। डायनेमिज्म, स्वॉट एनालिसिस एंड मल्टीटास्किंग, ये कॉमनली डिमांड में है कॉर्पोरेट में। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लुकिंग, अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी एंड इंटर्नशिप एंड प्रेजेंटेशन, आपका डायनेमिज्म बना रहना चाहिए, आपको स्वॉट एनालिसिस आनी चाहिए। If you are a person whom I can say the dynamic, you must be able to do the multitasking. You must be able. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डायनेमिक आदमी और मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, मल्टीटास्किंग टास्किंग में ये जरूर हो सकता है कि हम एक्यूरेट ना हो, बट वी प्रोड्यूस द रिजल्ट्स, ऐसा होता है, ये कह सकते हैं। और इतनी तो इतनी तो छूट मिल जाती है। Some practical knowledge, understanding of hierarchy, internship, factory visits, certification, any related ERP or program. See, since information technology has taken place in our personal and professional life, ऐसा लग रहा है जैसे आने वाली जो वर्ड है, आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो सिनेरियो है, we cannot imagine without internet, without software, without IT। अब हम इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे। पिछले 1.5 सालों से आप देखिए, ज्यादातर टाइम जो स्टडीज हुई हैं वो सारा कुछ ऑनलाइन चल रही है। और कौन सा कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आप मुझे बता सकते हैं जहां पर ईआरपी का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो? छोटा ही ईआरपी होगा मगर होगा, जहाँ पे सॉफ्टवेयर, और बड़ी कंपनीज तो विदाउट सॉफ्टवेयर दे कैन नॉट रन। सो having the certification of any software or language, especially the software, is going to give you the big mileage। ये आज के टाइम की बहुत सख्त जरूरत है। और जहाँ तक मेरी आईटी को लेकर समझ है, जहाँ तक मुझे एक्सपोजर है, आई बिलीव कि एडवांस एक्सेल का जो प्लेटफॉर्म है, या सी है, C++ है, अगर इस पे आपका होल्ड अच्छा हो गया, या ओरेकल बिजनेस इंटेलिजेंस काइंड ऑफ टूल आपने समझ लिया, तो फिर आप किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। चाहे वो एचआर का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो फाइनेंस का फाइको हो, फाइनेंस एंड कंट्रोल हो, या मार्केटिंग का हो, या कुछ भी हो, या पेरोल्स चलाने हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, तो उसका जो बेस है ना, वो आई बिलीव कि तकरीबन वही है। इसको आपको समझना पड़ेगा, और डेटा एनालिसिस आपको समझना पड़ेगा। ये जो एक नया टर्म आया बिजनेस एनालिस्ट, वो बिजनेस एनालिस्ट बिना डेटा एनालिसिस के कैसे पॉसिबल है? बिना डेटा एनालिसिस के तो आजकल चीजें मुझे लग रहा है कि बहुत रुक सी जा रही हैं, अगर हमारे पास डेटा एनालिसिस नहीं है। Obviously, team working skills, ready to adapt the new environment, adaptation और positive change को accept जितनी जल्दी आप कर लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। And at this time, what I see, सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स हैं, लेट मी टेल यू। एक फंक्शनल और दूसरा टेक्निकल। सो यू विल हैव टू डिसाइड कि आपको फंक्शनल पार्ट में जाना है या टेक्निकल पार्ट में जाना है। लेट मी मेक इट मोर स्पेसिफिक एंड क्लियर कि टेक्निकल और फंक्शनल पार्ट क्या क्या होते हैं। जहाँ तक मेरी समझ है, सपोज अगर किसी इंसान को वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, so the front end and back end of that particular website is being designed by the person who is ABC, so that particular ABC is the technical part of IT। ठीक है, और उसी सॉफ्टवेयर को मैं ले जाके उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ,
दूसरी कंपनीज में बता रहा हूँ, स्कूल्स में बता रहा हूँ इसके बारे में, मगर मुझे वो सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता, बट मुझे मार्केटिंग आ रही है उसकी, और उस सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे इतना पता है कि मैं उसकी मार्केट कर सकता हूँ। तो आई एम द फंक्शनल एंड दैट पर्सन इज टेक्निकल। यही इसका बेसिक फर्क, इसको इसको ध्यान में रखिएगा। सो मार्केटिंग अपने आप में एक स्किल है जो बहुत सारे लोगों ने सीखी और बहुत सारे लोगों की बाय बर्थ है, गॉड गिफ्टेड है। Practice and only practice in the room of interview, in the zone of interview, in front of interviewers, uh, either on telephonic conversation or face-to-face conversation. What I believe ki uh, your controlling ability, along with your homework and your attitude will will take you at that particular place where you can get or lose the job. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एक छोटा सा एग्जांपल आपको और दे देता हूँ एटीट्यूड एंड पॉजिटिव अप्रोच को लेकर। एक कैंडिडेट को एचआर ने कॉल किया अपने ऑफिस में, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया एंड ही entered to that particular organization and he asked the name of the HR and he went to the cabin of HR and he asked for permission. He got the permission and HR said okay sit down, please sit down. वो बैठ गया। एचआर ने उससे पूछा पानी पियोगे? उसने कहा यस। पानी पी लिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 5-6 मिनट जब एचआर ने कोई बात नहीं की और वहीं बैठा था एचआर और कैंडिडेट भी बैठा था, देन कैंडिडेट रियलाइज्ड कि समथिंग इज बीइंग हैपेंड। मतलब इज इट अ ट्रैप? क्या मुझे चेक कर रहा है? क्या ऐसा होता तो है नहीं, तो फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? सो उसने कहा कि एचआर से कहा कि सर कैन यू टेल मी वन थिंग? यस सर, एम आई सेलेक्टेड? तो नो, हु सेड टू यू? उसने कहा देन माय फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये अप्रोच होती है, ये आपका पॉजिटिव अप्रोच है, ये आपका एटीट्यूड है। इसके बिना आज के दौर में सक्सेस जरा सा टफ होती है, जरा लिंगर ऑन हो जाता है। तो कॉर्पोरेट में एक चीज जो बहुत पसंद की जाती है फ्रेशर्स की, दैट इज कैलकुलेटेड रिस्क एंड चैलेंजेस, रेगुलर लर्निंग। और रेगुलर लर्निंग सिर्फ न्यू कमर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी है, फ्रेशर्स के लिए। स्टिल वी स्टिल लर्न। लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस टिल द लास्ट ब्रीथ। आई बिलीव एवरीवन हैज टू लर्न। तो वो लर्निंग खत्म नहीं होती, चाहे वो किसी भी तरह की लर्निंग। दिस इज टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स from my side that thank you so much for your time and patience, and you been here. Thank you so much. Thanks a lot. Uh, Thank you, Ahmad Nadeem sir. Now I would request participants that if they want to ask the question, please raise the hands. We'll allow them to speak. If anyone has any question, or if you did not want to speak, then you can write your question in the chat box. Then I can read out. Any questions? Mohammad Faizur Rahman, Mohammad Maqsood, Saifur, and Sayyid Rehanul Haq. If you have any question, any query, please let me know. Okay, that's great. I have shared the Google form. Please go through it and share your feedback also. So thank you once again, Ahmad Nadeem sir. Thank you so much, sir. Or good session. I request you to please share the real feedback to me. So if there is any kind of need for upgradation, I'll do. Sure. We'll share the feedback to you also. And so we are ending the session. And I would like to thank you once again, our trainer, Ahmad Nadeem sir, and all the participants who are attending the session. So thank you once again. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you so much.